देखा है ट्यूशन का, तो इट्स यूजलेस एक्चुअली। चलो ओके, तो इसीलिए अब द फर्स्ट टॉपिक इन सेल रिप्रोडक्शन दैट वी वर स्टडिंग यस्टरडे वाज सेल साइकिल। ओके, सो द पहला टॉपिक जो है वो है सेल साइकिल। आम एनसीईआरटी लेवल पढ़दवा, तुम तो बेसी पढ़ार किसी दरकार नहीं। तो सेल साइकिल नाउ, तो ये जो सेल साइकिल के बारे में हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ मेन थिंग सेल साइकिल क्या है, इट डिस्कसेस ऑल द इवेंट्स दैट आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, नाउ तो इसलिए सबसे पहला जो कंसेप्ट है, ओके, तो दैट इज योर जो सेल डिवीजन है। मैंने लगे देखिए सेटा करनी सेम टा आज मु करबी होनी। So the formation of new cells from pre-existing cell is called cell division या cell reproduction. Okay, जैसे who introduced this concept बताइए। Rudolf Virchow. So the continuity of species of life or species depends on cell division. Yes, cell division. Okay, it was first studied by Strasburger in plants and found that new nuclei develop from pre-existing ones, and nucleus is essential for cell division. In animals, Fleming was the first to study. Prevost and Dornans described cleavage in the fertilized egg of frog. In the fertilized egg of frog. Virchow was the first to propose that new cells arise from pre-existing cells by division only, जिसको कि इन लैटिन हम लोगों ने कहा omnis cellula e cellula. Okay, omnis cellula e cellula या cellulae. This is called the law. This is called law of cell lineage. Lineage मतलब line. Okay. The mode of cell division is क्या? Similar in all organisms. So the mode of cell division is fundamentally similar in all organisms. Fundamentally similar among all organisms, showing unity of life among these organisms. मतलब हर organisms का there is a unity of life, a similarity in life. So वो हमारा ये टॉपिक है। Now उसके बाद जो why the cell divides, okay, ये बहुत important question है. Lot of people confuse that why a cell divides. तो हम जानते हैं this is with respect to what? The volume of cell. So causes of cell division. Number one is when a cell grows in size, its nucleocytoplasmic ratio, इसको कैरियोप्लाज्मिक रेशियो और कर्नप्लाज्म रेशियो भी कहते हैं, and surface area per unit volume decrease. Surface area
टू वॉल्यूम रेशियो लिख सकते हैं. सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो. ओके, so it's nucleocytoplasmic ratio, nucleocytoplasmic ratio and surface area to volume ratio क्या decreases. both. Fine. Decreases. क्यों? Because nucleus increases, cytoplasm increases more than nucleus. Similarly, जो volume is increasing more. Okay, when a cell grows in size, तो ये हम जानते हैं कि जैसे increase in size होगा, आपका क्या होगा? ये दोनों decrease कर जाएगा. Okay, so now the cell. Okay, so now the cell has only two options. Number A, die. Okay, and you know nobody wants to die. Number two is divide. Divide. Now tell me, why did I write die first and divide last? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने पहले डाई पहले क्यों लिखा? सर क्योंकि डिवाइड तब करेगा जब मतलब एनर्जी होगा. Yes, please increase your mic volumes. Okay, so इसीलिए because dying is easier than dividing, because dividing मांगता है एनर्जी. पिसा दो. तो जब तक आप एनर्जी नहीं देंगे सेल डिवाइड नहीं करेगा. It cannot divide. So dying is actually easier than dividing. समझ में आया? तो like that. Yes, sir. So to maintain nucleocytoplasmic Cytoplasmic ratio index. and surface area, to maintain nucleocytoplasmic ratio and Surface to volume. higher SA by volume ratio, cell divides. ठीक है? Cell divides as smaller cells are more active as they have more surface area to volume ratio. ठीक है? ये सब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है. So इसको थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करेंगे. Now to maintain nucleocytoplasmic ratio and high surface area to volume ratio, ये भी अभी नहीं लिखना चाहिए. So now two options, divide or die, full stop. Now as the cell size increases, the metabolic rate of the cell also decreases. This makes dying more easy. Okay, yeah, this results in death लिखने से होगा ना. This takes the cell towards its death. ठीक है जी? In order, भाई आपको अगर मरना नहीं है तो in order to avoid death, क्या cell has to increase क्या its metabolic rate. समझ रहे हो? अगर आपको जिंदा रहना है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना पड़ेगा. तो सेल हैज टू इंक्रीज इट्स मेटाबॉलिक रेट. दिस इज facilitated by, okay, in order to avoid death, cell has to increase its metabolic rate. This is facilitated by, yeah, this is facilitated by
dividing as smaller cells as is further dividing because as the cells become smaller, assay by volume ratio increases. This makes entry and exit of substances easier. Easy. So helping in increasing the rate. So helping in increasing the rate of reaction. Okay. So helping in increasing the rate, increasing the metabolic rate. समझ रहे हो? क्यों मेटाबॉलिज्म कम हो गया था? तो नहीं सब चार्ज कर तो खराटा पड़ेगा नहीं रखो. So this makes entry and exit of substances easier. Okay. So helping in increasing the metabolic rate. Now, as metabolism increases, okay, as metabolism increases, क्या होगा? An ATP formation also increases and hence life becomes possible. पहला तो इसीलिए ये सेल डिवाइड करता है. बहुत लोग सोचते हैं सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है. एक्चुअली आई डोंट अप्रूव द टर्म रिप्रोडक्शन. ओके, सो ये जो टर्म लिख रहे हैं सेल रिप्रोडक्शन, एक्चुअली आई विल नॉट अप्रूव दिस वर्ड. द रीजन इज कि जो इस प्रोसेस में सेल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, द सेल इज एक्चुअली डाइंग. ओके, या जो मदर सेल वो तो गया ना, तो लाइक दैट Parent cell. to maintain N/C ratio and high, the cell divides. ठीक है जी. तो ये हमारा बेसिक लॉजिक है. नाउ duplication of DNA also initiates cell division as it disturbs DNA-RNA ratio. Actually उसका जो initiating condition क्या है, that DNA डबल हो गया. तो जब DNA डबल हो गया, न्यूक्लियस साइज बड़ा हो गया, तो अब डिवीजन कर देना बेटर है, क्योंकि आपका DNA by RNA रेशियो अफेक्ट होता है. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे द मेन टॉपिक जो हम लोग कल शुरू किए थे. सो दैट इज कॉल्ड द सेल साइकिल. Now, so please remember this is a very, very important part of the discussion. Now, in case of cell division, basically हमारा क्या है? That is the cell cycle. Basically, we are dividing it into two phases. As we discussed, so इसमें cell division का पहला topic जो है, that is cell cycle. Okay, cell cycle. And you know we have already introduced this topic yesterday. तो इस टॉपिक को हमने इंट्रोड्यूस किया था दैट ये जो साइकिल है, ओके, सो अब सेल साइकिल जो है, दिस वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय हावर्ड एंड पेल्क. ठीक है. सो
It was discovered by Howard and Pell in 1953. ठीक है ना। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो हमारा सेल डिवीजन प्रोसेस है कि नहीं, सेल साइकिल प्रोसेस, इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व है। ओके, एक फेज इंटरफेज है कि नहीं, एंड दूसरा जो है वो है क्या, डिवीजन फेज। तो इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, तो इन द इंटरफेज द सेल prepares to divide. All the events that are taking place, they are preparing the cell for division. Okay, तो इसीलिए जो इन द सेल साइकिल आपका जो इंटरफेज है उसको कभी कभी कुछ लोग रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, पर टेक्निकली उस समय सेल रेस्ट नहीं कर, मैक्सिमम एक्टिविटी। हाँ हाँ। तो बहुत लोग, देयर इज अ टेंडेंसी दैट द पीपल से द सेल्स रेस्ट। चलिए, तो इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं सेल साइकिल का। So the cycle or cell division cycle is the series of events that take place in the cell that cause it to divide into two daughter cells. Okay, these events include duplication of its DNA and some of its organelles, and subsequently the partitioning of its cytoplasm and other components into two daughter cells in a process called cell division. तो ये उसका बेसिक डेफिनेशन है। Now, उसके बाद ये we know we have two types of cells, है कि नहीं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल एंड एक है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है वो थोड़ा लिखेंगे। In cells without nucleus, okay, माने विदाउट डेफिनाइट न्यूक्लियस, एक्चुअली न्यूक्लियस तो होता है बट डेफिनाइट नहीं होता। The cell is divided into the B, C, D and D periods. The B periods extends from the end of cell division to the beginning of DNA replication. Okay, and DNA replication occurs during the C period. Okay, the D period refers to the stage between the end of DNA replication and splitting. तो ये हमने उसका स्टेजेस को डिवाइड कर दिया है। So this is with respect to the prokaryotes. Now, eukaryotes में क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, तो उसमें हम लोग I और M फेज यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। ठीक है, सर ये बीसीडी किसी डायग्राम के हाँ डिस्क्रिप्शन हाँ, माने वो एक जो उनका टर्मिनोलॉजी है ना, तो उनका ये अलग टर्मिनोलॉजी है। माने हम उसमें पैरेललिज्म ड्रॉ करेंगे। जो आप जिस साइकिल का डिस्कशन करते हो दैट इज द यूकैरियोटिक साइकिल, है कि नहीं, जिसमें हम इंटरफेज बोलते हैं। सो इन सेल्स विथ न्यूक्लियाई, ओके, द सेल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस, इंटरफेज देख रहे हो, तो यहाँ ये आई कहलाएगा, एंड माइटोटिक या एम फेज। ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल ग्रोज, okay, accumulating nutrients needed for mitosis and replicates its DNA and some of its organelle. During mitotic phase the chromosome ऐसे divide हो जाता है। Now to ensure proper replication there are control mechanisms, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, बट इधर क्या हो रहा है, तो ये हमारा आई एंड एम फेज है, बट प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा है, उसमें बी पीरियड जो है that is from end of cell division to beginning of DNA replication, तो उसको हम लोग क्या कह काइंड सकते ऑफ हैं, G1। yes, similar to G1 G1. ओके, तापरे
DNA replication occurs in the C period. तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? Similar to S phase. And जो D period, जो the D period is between the DNA, the end of DNA replication to the splitting of the bacterial cell. So G2. this is equal similar to G2 plus M. Can you tell me why? Splitting of bacterial cell. Why into- उसने उसको अलग नहीं किया, एक E पीरियड बोल देता? सोचो कि ये E पीरियड उन्होंने क्यों जनरेट नहीं किया? सर एक ही क्रोमोसोम होता है उसमें, तो सोचो 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 It does और not- सोचो. देखो, दैट इज वाई यू नो, साइंस जब पढ़ो तो अगर भेजा ही काम ना करे फिर साइंस पढ़ने का फायदा क्या है? ओके, ये देखो, ये भी एक पर्टिकुलर जेजेएस कंसेप्ट है. ये बीसीडी पीरियड आपने और कहीं पढ़ा है? कालू वालू इतना पार्ट पढ़ लिए, बताइए आद्या रानी. No sir, no sir, no sir. हैव यू रेड इट एनीवेयर एल्स? No, sir. तो भाई आपको वो लोग भी तो पढ़ा ही रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो हर नया चीज आप जेजेएस के पास क्यों पढ़ते हैं? चलिए बताइए, गेस इमीडिएटली, बिकॉज इट्स वेरी इजी कंसेप्ट, यू हैव टू थिंक. ये काफी आसान सा आंसर है. व्हाई देयर इज नो सेपरेट एम फेज? बोलो, एनीबडी, एनी गेसेस? अभिषेक मांटी Sir, बोलो. sir, is it because the genetic material is not equally divided? नो May or may not be. नो, और भी इजी है, आंसर इज मोर इजियर. इटा बनाने के लिए जी. बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो. Sir, lesser and less densely packed. नो 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 नो, genetic और material. भी इजियर है. उसका नाम नहीं रखा है उसका. थोड़ा तो भेजा लगाओ आद्या, कुछ लस्सी वस्सी बनाओ उस ब्रेन का. ये तुम लोग का अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, बहुत कॉस्ट मिलेगा बेचने से. Sir, can you please once again repeat the question? I was not. Why we have two different? उधर क्यों ये BCD एक तो नया नौटंकी निकाला हुआ है? ओके, तो अगर भी निकाला हुआ है तो M फेज को अलग से क्यों नहीं दिखा रहे हैं? सर इनका जो ग्रोथ होता है वही तो No, no, मतलब no, no stories. Sir, no. nucleus होता ही नहीं है. Very good. I know Adya will tell the answer. अरे भैया, इनका अलग होता ही नहीं है न्यूक्लियस. तो इनका साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस इज सेम, बट हमारे केस में अलग Yes, sir. अलग केस है. साइटोप्लाज्म एक तो चीज है, न्यूक्लियस एक तो अलग चीज है. तो इसीलिए I phase is generally discussing the preparation and the M phase is discussing the division. Another answer lies in Anisha Didi's answer that there is no planned division. Okay, तो इसीलिए डेफिनाइट M करने का जरूरत नहीं है. But why they don't have, why do we need a different terminology? Is because there is no nucleus concept there. Okay, चलो गुड. सो दिस इज द बेसिक जो डिटेल्स है हमारा जो सेल साइकिल में. ठीक है, चलिए, तो इसीलिए यही सब चीज आप डिस्कस करेंगे. नाउ इन सेल्स विदाउट न्यूक्लियाई जो है हमारा BCD पीरियड्स रहता है, एंड विथ न्यूक्लियाई हमारा I and M पीरियड रहता है. ओके, नाउ उसीलिए ऑब्जेक्ट ऑफ सेल डिवीजन अलग अलग हो सकता है. क्या? इन मियोसिस व्हाट इज द ऑब्जेक्ट?
to produce gametes or to produce haploid organisms, है कि नहीं? But in case of mitosis main objective क्या है? To increase the number of cells. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. So ये आपका concept है. Now basically the cell cycle is divided into 2 phases जो हमने पढ़ा, but उसको फिर हम अलग अलग सब डिवाइड कर चुके हैं. बेटा बुझ जाओ, these are very important topics to understand, okay? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो जाओगे फिर आगे आपका ब्रेन काम करेगा. Now the eukaryotic cell cycle consists of 4 distinct phases, G1S, G2 and M. Now M phase itself is again divided, is composed of 2 tightly coupled processes, mitosis, इधर आप याद रखना, और meiosis भी इधर होगा. बहुत लोग क्या सोचते हैं, meiosis के पहले इंटरफेज नहीं होता. नो, M is mitosis as well as meiosis. तो आप बोलोगे सर आपके अलावा ऐसा और कोई क्यों नहीं बोलता है? The reason is 99.99% डिवीजन क्या होता है? Mitosis. In our body, in Sandeep's body, there are suppose 200 types of cells. How do they divide? So 199 Mitosis. divide by mitosis and 1 divides by meiosis. So इसीलिए why to tell about meiosis? But still you should know that M stands also for meiosis. कोई शक? No, sir. No, sir. चलिए, तो इसलिए ये जो M फेज में हमारा न्यूक्लियर डिवीजन होता है एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ओके, सो न्यूक्लियस डिवाइड्स, इसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोल सकते हैं, एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ओके, इसमें हम न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं. Activation of each phase is dependent on proper progression and completion of the previous one. Now, cells that are temporarily or reversibly stopped dividing are said to have entered a state of quiescence, okay, called G0 phase. So, who gave the term of G0 phase? Lajtha. Okay, Lajtha coined the term. Okay, G0 phase. G0 phase. है ना? तो लाजथा ने वो टर्म को कॉइन किया. ओके, कोई शक? बोलिए, any शक you have? No, sir. No, sir. No, sir. Now, because ये G0 फेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि कंट्रोवर्सीज यहाँ बहुत है. ओके, तो G0 फेज इज वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल. ओके, नाउ इसीलिए ये जो G0 फेज के बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सेल्स G0 में रहते हैं, बहुत सारे सेल्स G1 में अरेस्ट होते हैं. तो ये याद रखना, इसीलिए ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है कि G0 माने कौन एंड आपका जो G1 माने कौन. देखो क्या है, यू थॉट दैट नहीं आई कैन इजीली डिवाइड, उसमें क्या है, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं डिवाइड कर जाऊंगा. एंड एक आप घुस गए फिर बीच में छोड़ के भाग गए. So that is called G1 phase. Okay? तो इसलिए G1 phase जो है उसमें भी बहुत सेल्स अंदर जाते हैं एंड वो क्या, they don't continue division. ठीक है जी? So like that. तो इसलिए उसका हम लोग डिटेलिंग करेंगे थोड़ा देर में. चलिए, तो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए that there are different types of phases. तो उसको क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं, क्विसेंस.
What do you understand by quiescence? Any idea about quiescence? Quiet. Resting. Huh? Yeah, a type of rest. Okay, a type of rest, but technically it is not rest. Okay, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में. चलिए, तो अब हम लोग आगे चलते हैं. सो नाउ जो हमारा ये जो स्टेजेस है सेल साइकिल का, फाइन. तो इसमें आपका जो अलग अलग स्टेजेस है, तो गैप 1, गैप 2 जो है उसको भी हम लोग अलग अलग नाम से जान सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज द गैप 1 फेज, बताइए. तो गैप 1 फेज का मतलब क्या है? दैट इज कॉल्ड Pre-DNA synthesis. प्री माइटोटिक, हाँ, प्री सिंथेटिक गैप फेज. वी कैन ऑल्सो कॉल इट प्री सिंथेटिक गैप फेज. क्लियर? चलिए, तो इसीलिए बिफोर दैट मैं हम लोग ब्रेक में डायग्राम देखेंगे, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं ना. इसीलिए वी विल स्टार्ट आवर सेल साइकिल फ्रॉम व्हाट, या मैं अपना एक पॉइंट यहाँ लिख देता हूं. एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, ओके, एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, the daughter cells have 3 or more, 3 options, generally 3 options. The daughter cells have 3 options, है कि नहीं? A, to continue cell cycle forever. ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है? सेल साइकिल में जाएंगे. भाई जब हम सेल साइकिल वाले हैं तो हम सेल साइकिल में जाएंगे. Such cells are called क्या? Dividing cells, and they generally do not differentiate. ठीक है, तो ये डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. नाउ सेकेंड ऑप्शन क्या है? टू लीव द सेल साइकिल एंड एंटर इनटू डिफरेंशिएशन प्रोसेस एंड बिकम different types of cells. Okay, so such cells enter G0 phase, and these cells are known as क्या? Differentiated cells. ओके, तो ये लोग डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाते हैं. कौन बोलते सर? हाँ, डिफरेंशिएटेड सेल्स. अरे बाबू पढ़िया. ओके, आर कॉल्ड डिफरेंशिएटेड सेल्स. समझ रहे हो? Ella? So to leave the cell cycle and enter into differentiation phase and become different types of cells. ठीक है? Now उसके बाद C जो है, so that is to remain at the same point
in an undecided state. Okay, to remain at the same point in an undecided state so that they can enter either of the two above states. Okay, to remain at the same point in an undecided state so that they can enter either of the two above states. Hello? So either of the two above states. ठीक है जी? To remain at the same point in an undecided state, इसको हम लोग थोड़ा inverted commas में लेंगे. क्यों undecided? Because we have not yet decided कि हम क्या करेंगे. So that they can enter either of the two above states. Such cells, are known as क्या? Stem cells. STEM. Okay, such cells are known as stem cells. ठीक है जी? Now, so they retain totipotency. Okay, they retain totipotency. तो इसको हम लोग लिखेंगे जो डिवाइडिंग सेल, दे आर टोटिपोटेंट. तो ये तो टोटिपोटेंट है ही है, बट इसमें दे रिटेन टोटिपोटेंसी. ठीक है जी? नाउ sometimes cells that have entered G0 phase, that is differentiation. Okay, so sometimes cells that have entered G0 phase may differentiate. मैंने जानबूझ के बीच में कैपिटल डी लगाया हुआ है, ओके, बट आप नहीं लगाएंगे. So may differentiate to become undifferentiated. Hello? So they may differentiate to become undifferentiated. Okay. Now such cells are क्या? So such cells are capable. Such cells are capable to redivide after a long gap. है कि नहीं? ये लोग डिवाइड कर सकते हैं. So such cells are capable to redivide after a long gap of losing division ability. Okay, these are the cells that help in the process of regeneration. समझ रहे हो? Do you understand this? Yes, sir. Yes, sir. देखो, रीजेनरेशन एंड जेनरेशन में फर्क है. ओके, रीजेनरेशन एंड जेनरेशन में फर्क है. फॉर एग्जाम्पल, स्किन जो है, स्किन तो डिवाइड करना ही करना है कि नहीं? माने स्किन Yes, sir. will divide. There will be production of new cells. So they will divide. इसीलिए they already have stem cells. समझ रहे हो?
तो प्लीज रिमेम्बर, कहना बहुत बुक्स में स्टेम सेल कंसेप्ट में थोड़ा एकड़ सेकड़ है। अंडरस्टूड? नाउ जो हमारा स्किन का स्टेम सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। Understood? They are already there. So that is why our skin can be formed throughout life. समझ में आया? उसी तरह लिवर में आपका स्टेम सेल्स होता है तो लिवर बन सकता है। तो जो जो सेल्स में we have such cells, they can divide and divide and divide and produce cells for replacing the worn out cells. समझ में आया? But जैसे स्टारफिश हुआ, स्टारफिश के केस में when it lost the arms, तो वो जो सेल्स ऑफ द आर्म्स वो किस तरह के सेल्स थे? डिफरेंशिएटेड ना स्टेम सेल्स? Stem cells. सोचिए एंड बकिए, ओके? डोंट टॉक Sir, नॉनसेंस। differentiated थे, Differentiated sir. थे. Yes, sir. तो हाउ आर दे स्टेम सेल्स अनीशा? देख रहे हो ना? देखो, अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, यही मैं चाहता हूं। ओके तो जो आप लोग चुप्पी साध के बैठते हो ना, उससे कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। एंड ये आप लिख के ले लो, बिकॉज आपके मन में वो सब बातें रह जाएंगी एंड कभी बाहर नहीं आएंगी। एंड अल्टीमेटली जब कहीं जरूरत पड़ेगा आप कुछ ना कुछ बकवास बोल दोगे। समझ रहे हो? जो स्टारफिश का वो आर्म ऑलरेडी बना हुआ है, तो हाउ इट इज ए स्टेम सेल? समझ रहे हो? तो वो ऑलरेडी एक Yes, sir. डिफरेंशिएटेड सेल है। न्यूट्स में वो एक क्या है? इट इज ऑलरेडी ए लेग। वो ऑलरेडी एक लेग सेल बन चुका है, लेग बन चुका है। उस लेग के अंदर वर्टिब्रा होंगे, उसके अंदर मसल्स होंगे, उसके अंदर नर्व्स होंगे, अलग अलग तरीके के सेल्स उसके अंदर हैं। So they have all entered which stage? Differentiated. G not. They've all G, sir. left cell division. Yes, sir. They've all left cell division. Now, did starfish know that मुझे कल हाथ फेंकना है? No. No, sir. No, sir. No, sir. But did your skin know that I have to replace myself? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, because skin एक outer layer है, okay? उसको इंजरी प्रोन है, सो जरूरत पड़ेगा तो वो लॉस होगा। अगर लॉस होगा मुझे उसे वापस करना पड़ेगा, वरना जो सेल है, वरना जो स्किन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम भी खत्म हो जाएंगे। Understood? So there are blood. We have hematopoietic stem cells. They are pre-existing because जब भी हम लोग कोई सेल का डिस्कशन कर रहे हैं जो कि परमानेंट यूज में है, तो वो अगर लॉस हुआ तो यू हैव टू मेक इट अगेन। जी सर। तो इसीलिए वो सब स्टेम सेल्स रखते हैं, because differentiated cell cannot divide. So you have to have some cells which will divide and produce new cells, and these new cells will undergo differentiation and make new blood cells, make new sperm cells, make new liver cells, make new buccal epithelium. Okay, but starfish का जो आर्म है, न्यूट का जो लेग है, लिजर्ड का जो टेल है, क्या ये जनरली लॉस होता है? No, sir. Only in emergency. Okay, so is it a normal affair? No, sir. No.
So will it have stem cells there? No, sir. No. समझ में आया? But still it can regenerate. Yes, sir. Why? So वो de-differentiate होते हैं, sir. Because those cells can come back to zero state. And समझ रहे हो? क्योंकि ना बहुत बुक्स में आप देखोगे, बहुत बुक्स इन योर +2 लेवल बुक्स, बहुत बुक्स को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि डी डिफरेंशिएटेड इज इक्वल टू स्टेम सेल, है कि नहीं? Yes, sir. बट व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ बोलो, अब फिर चुप क्यों हो गए? फिर डिफरेंस क्या है? सर स्टेम सेल पहले से प्रेजेंट होता है एंड डी-डिफरेंशिएटेड जब नीड होता है तब बनता है, सर. Means नहीं, again this is a very vague use. Stem cells did not decide, did not enter into G1 or G0. It just abstained from making a call. Okay, like Atman, you'll want to become a doctor or something else? डॉक्टर, सर. So you have made your call. आप already एक call बना ले चुके हो. But there may be some of your friends who are in undecided mode. वो जो मिलेगा वो ले लेंगे, है कि नहीं? तो that is the case. So at the end of the day they will decide कि उनको क्या बनना है, क्या लेना है. But वो हर चीज की तैयारी कर रहे हैं. कोई शक? नो, सर. तो No. इसलिए you are a differentiated cell, but they are what? They are Stem cells. undifferentiated cells. Okay, so they are the stem cells. But yesterday you get, suppose you get your any, जैसे बालेश्वर मेडिकल कॉलेज, okay, and on the other hand you get MIT, Massachusetts. So what will जी, you sir. think? Sir, run for MIT. So you'll go for MIT because you are reading maths. Yes, so sir. you are not a bad student in maths. So you will go for MIT. Why? Sir, because I got a better opportunity. Because that is a Far better better scope. opportunity. That is a far better scope. So इसीलिए जी, sir. suppose you get AIMS Bhubaneswar and MIT. एम्स भुवनेश्वर. तो समझ रहे हो कि नहीं? मीन्स हमारे पास कॉल है कि हम कितना Yes, पूरा sir. फंसे हैं एंड कहाँ जा सकते हैं. Like इस बार भी there are children who like अभिलाषा दीदी, she first took IISc Bangalore, but then जब उसको SCB मिला she came back to SCB, but then उसको फिर एम्स कल्याणी मिला तो she went to एम्स कल्याणी. तो समझ रहे हो? So she did not fix her options, but in your case you are changing track. अगर आपको एक नॉर्मल कॉलेज मिल रहा है एंड उधर MIT मिल रहा है तो you are jumping to MIT. You have shed your childhood dream of becoming a doctor. So the माने कौन? Was it easy? No, sir. Why? Because you are planning to become a doctor from day one. Your जी, parents sir. may still insist you नरे नहीं जा पौरे MD देखी बा. तो इस तरह से तो you are in a dilemma. You are being forced. So आपके पास ऑप्शन माने you have to first leave that tag of being a doctor. You have to shed your dream of becoming a doctor and then re-craft your mind, body, psyche towards a new line of engineering. तो समझ में आया? So that is why for becoming an engineer, first you have to de-differentiate from a doctor. है कि नहीं? आपको MBBS का सपना बेचना पड़ेगा, वापिस जीरो में आना पड़ेगा, फिर आपको इंजीनियरिंग का सपना खरीदना पड़ेगा. जी, सर. Understood? But Yes, sir. आद्या जो आद्या नहीं, अक्षिता जन्ना, are you there? Yes, sir.
Suppose same situation comes for you, MIT or your Baleswar Medical College. MIT. चलिए, suppose Sandeep Singh, MIT or Baleswar Medical College. Sir, MIT. Anisha, MIT, Baleswar Medical College. Sir, MIT. अबे कोई भी कोई maths बालेश्वर बालेश्वर नहीं, nobody is weak in maths. Who is weak in maths? Who will take Baleswar, not MIT? Sir, me. Shobhan, Yes, sir. why? Sir, weak in maths. समझ में आ गया कि नहीं? अब जो शोभन भैया है उसका दुनिया डूब जाए तब भी वो मेडिकल लेने के लिए बाध्य है. The reason is he has closed options. समझ में आया? तो इसलिए वो he will remain in G0. He will not enter into G1 again. क्यों? क्योंकि वो रास्ता भूल छोड़ आए हम वो गलियां, है कि नहीं? Means we cannot go to MIT because we are very poor in maths. So do you understand? So that is the concept. तो आप समझ रहे हो de-differentiated and stem cells का फर्क आपको पता चल रहा है? Now you may be thinking why I am selling so much stories here, because there will be books which suggest they are the same thing. Okay, so like that. Even in Truman's book उसमें लिखा है there are 3 types of cells: dividing, differentiated and de-differentiated. Atman Swami, is there any de-differentiated Yes, sir. cell? एक बॉडी में de-differentiated सेल होता है क्या? नो सर, नो. नहीं होता. वो When कब requirement बनेगा? comes, it आता. वो कब बनेगा? जब requirement होगा. जब रिक्वायरमेंट होगा, नहीं जब कोई इंजरी होगा. ओके, जी सर. सपोज मैं आपका हाथ काट दूं तो कैन यू रीजनरेट योर हैंड? नो सर. व्हाई नॉट? सर मेरे आर्म के सेल्स में टोटिपोटेंसी नहीं है सर. Yes, all the cells like your bone cell, muscle cell, skin cell, nerve cell, Yes, जी sir. cell, they could not. Again, you are using a They wrong, don't have totipotency in the cells. you are using a wrong term, Atman Swami. I don't want my students to talk nonsense. You don't have totipotency, nahi, my dear. You cannot de-differentiate. समझ रहे हो? तो Yes sir. Yes, जी sir. सर. don't be swayed away by your emotions. Okay, तो why? Yes sir. टोटिपोटेंसी तो बाद की बात है छोरे, पहले वापस तो आ. सर Okay, डी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता. your cells cannot de-differentiate. सिंपल सा लॉजिक है. नाउ जब सत्य सार्थक अपने घर से गया तो he left his parents and went to US. Why? जो पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए साले इतना कुछ किया, तुम उनको छोड़ के भाग गए. Why you left your mommy and daddy? Answer fast, don't sell stories. Why you left your mommy and dad? सत्य सार्थक. अरे So mostly because of better opportunity. हाँ, because I got a job in the States, so I went there. Yes, sir. Did you kick your parents? No, sir. So, if required, can you come back? Yes. Yes, sir. Yes. क्योंकि आप जो पेरेंट्स के से दूर गए, आप क्यों पेरेंट्स से दूर गए? क्योंकि आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बाहर मिला. So to take that opportunity to went abroad, but you are doing well, everything is fantastic, earned a lot of money and etc 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 etc. But in the longer times your parents are getting older.
and there was a time they felt that you should come back and be with them. So since you also had good relations, you came back. Yes. Because a very difficult call, money, success, uh, good life, or back to parents, your creators. ये बहुत सारे बच्चे जो कॉल नहीं ले पाते हैं. चलिए, but that's your time. when वो समय आएगा, you will also have this, but you will also have this dilemma. What to do now? But one day what happened? शोभन्स फादर, जिसने कि शोभन भैया को इतना देर पढ़ा लिखा के खर्चा किया, तो शोभन का डैडी उसको बोले थोड़ा 5 लाख रुपए दे, तो हम लोग का कुछ काम है. तो फिर शोभन भैया बोलता है कौन काम अच्छे आगे मत जस्टिफाई करो. तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाए. तो शोभन ने उनको गाली दिया, बोला साला सब बड़े कौन पैसा मांगो, बदतमीज, मूर्ख, इडियट्स करके वो घर छोड़ के भाग गए. So he misbehaved with his parents, scolded them, hit them, Kicked. and he left his house and went to other state and वहां सेटल किया, वहां शादी वादी कर लिया. तो जब बच्चा हुआ तो उसकी बीवी भी वर्किंग है, वो भी वर्किंग है. अब बच्चा को खिलाएगा कौन? तो who will take care of the child? So Shobhan, can you call your mummy to help you? बोलो. No, sir. क्यों? तेरी माँ है, सगी माँ है, No, sir. उसके नाती की, तेरी मम्मी की नाती है, तेरा पापा का नाती है, दोनों बूढ़े हैं, वो लोग इधर बेकार बैठे हैं. तो they would love to be with their नाती. But do you have the guts of calling them back? Uh, no, sir. डैडी भूल जाओ वो जो हुआ था, अब आओ और अपना नाती का केयर करो. Can you tell? No, sir. But Satya can tell. Satya can call his mother to US and ask her to take care of the child. Yes. But why Shobhan Bhaiya cannot? Because Relation the way तोड़ दी. he left. जिस तरह से आप गए, उस तरह से आप वापस आना मुश्किल होगा. नहीं आ सकता. Call your parents, वो तो आ जाएंगे क्योंकि they forgive, they are bigger people, तो वो forgive कर देंगे आपको. पर आप में इतना guts नहीं है कि आप उनसे forgive करने को बोल दो. Do you understand? So please, I am saying so many stories just so that you can understand the difference between a de-differentiated cell and a stem cell. Stem cell. You will have places where there are issues. Okay, कोई शक? तो ये हमारा concept है. So these red lines are very very important for you to understand. तो इसीलिए if an organism is totipotent, okay, so what is the case? If an organism is totipotent, तो उसके पास दो चीजें होंगी. नंबर 1, उसके पास स्टेम सेल्स होंगे, एंड नंबर 2, उनके सेल्स डी डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अंडरस्टूड? सो ये याद रखना. ठीक है जी? तो लाइक दैट. नाउ इन स्पॉन्जेस व्हाट डू यू हैव? दे व्हाट इज देयर इन स्पॉन्जेस? बोलिए. स्पॉन्जेस में स्टेम सेल है ना डी डिफरेंशिएटिंग सेल है? think. आत्मन, तो जानी चाहो थे साइलेंट हो जाओ तो कौन हो?
स्पॉन्जेस में क्या हो सकता है? Stem cell. So what are the stem cells of sponges known as? Archaeocytes. Archaeocytes. So Yes, sir. archaeocytes are totipotent cells of sponges. So they will make new cells and stimulate them to differentiate. But what is there in a newt or a lizard? Differentiated. Only some of the cells are totipotent. Differentiability. Differentiability. Understood? क्योंकि उसके टेल में कोई स्टेम सेल नहीं था, उसके सेल में ऐसे सेल्स थे जो वापस आ सकते थे। कोई शक? तो इसलिए Yes, sir. जनरली अगर हम लोग जनरली एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो डी डिफरेंशिएबिलिटी वर्टिब्रेट्स का फीचर है एंड स्टेम सेल्स जनरली आपका इनवर्टिब्रेट फीचर है। ओके, तो ये याद रखना जनरली, बट आई एम नॉट बीइंग रिजिड, ये जनरली आई एम यूजिंग इट टर्म। क्लियर? सो इसको समझेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फाइन, सो एक्चुअली द मीटिंग इज elongating, it कट नहीं रहा है। अगेन देयर इज अ गिफ्ट, आई एम deliberately ending it and you rejoin, huh?